નમસ્કાર ધોરણ 7ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 6 છે વિક્રમ સારાભાઈ, તેમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પહેલો છે, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार वाक्य बनावाना है अर्थपूर्ण। तेमा જોઈએ પહેલું तो विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। उसके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। प्रश्न बीजो है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो किताब, तो किताबें मैंने 2 किताबें खरीदी। नदी तो नदियाँ नदियाँ हमें पानी देती है। नारी तो नारियाँ मधुर गीत सुन रही थी। माली तो माली ही होता है, माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। त्यार पछीनो प्रश्न है मित्रों त्रीजो प्रश्न। तो त्रीजो प्रश्न जे है एकदम सरल अने सिंपल है, जेमनी अंदर तमारे अनुवाद करवानो छे। जेमां अनुवाद छे तेओ फक्त उच्च कोटीना वैज्ञानिक ज नहोता, परंतु काममां व्यस्त रहवा छतां कला शिक्षण तथा समाजने माटे पूरतो समय काढी लेता हता। तेमज तेमना ज प्रयत्नोने लीधे अमदावादमां लोक विज्ञान केन्द्र अने नेहरू विकास संस्थानी स्थापना थई। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા હતા। તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ નાનકડું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આવા જ એક સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।